Hello friend, this is Raj Singh. Welcome back in Raj classes. This was the chapter 2 in which we discuss this chapter microorganism friend and foe. What is microorganism in Hindi meaning? This was called an सूक्ष्म जीव, and the friend and foe meaning in friend means mitra, dost, and foe means satru, dushman. So let's start this chapter and discuss it line by line the topics and watch carefully. You have seen several kinds of plants and animals, however, there were the other living organisms around us which we normally cannot see. This is called microorganism or microbes. What is microorganism and microbes? Firstly, we discussed that microorganisms, this was a chapter heading, and microbes. This is a microorganism in which this is the definition. There are the other living organism around us which we normally cannot see, in which we normally can't see. This is called microorganism. In the Hindi definition was that the microorganism which was called as सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें हम अपने सादा नॉर्मली हम आँखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं या माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, you might have observed have that during the rainy season most bread gets spoiled and its surface gets covered with the grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. हम जब बारिश के समय हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रीसी टाइप हो जाते हैं पैचेस ऑन द bread. What is that which we see using the magnifying glass? You will see teeny black rounded structure. Do you know what this structure are and where this come from? And वह कहाँ से आते हैं इसको हम पढ़ेंगे. Activity 2E2.1 पे firstly we discuss microorganisms. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. ये जो एक्टिविटी 2.1 कहता है, हमें मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द बीक फिल्ड इन द बीकर, हमें सॉइल लेना है बीकर में. ऐड वाटर एंड सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड. जब सॉइल पार्टिकल सेटल्ड हो जाएगा ज़मीन पे, उसमें द सरफेस ऑफ दिस बीकर down and absorb a drop of water and beaker under the microscope. and जो drop of water रहेगा उसको absorb कीजिए माइक्रोस्कोप में. Activity 2.2 Take a few drop of water from a pond. कुछ पॉन्ड में से आप पानी लीजिए बूंद के, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड कीजिए, फैला दीजिए, एंड ऑब्जॉर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और ऑब्जॉर्व कीजिए थ्रू अ माइक्रोस्कोप. दिस इज द एक्टिविटी 2.2. Do you find any teeny or moving around? क्या आपने उसमें कुछ छोटे टीनी ऑर्गेनिज्म को पाया? These observations show the water and soil are full of teeny organisms. ये जो हमारा ये एक्टिविटी है, ये हमें बताता है कि जो सॉइल है वो फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गन्स है. तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. ये सही नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी माइक्रोब्स के ही, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं है. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, और ये बहुत ही छोटे होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. वह हमें अपने साधारण आँखों से नहीं दिख सकता. सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास. और इसमें से कुछ एग्जाम्पल है मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं ब्रेड पे, विच वॉज एकर. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. और बिना माइक्रोस्कोप से और किसी को भी नहीं देख सकते. दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, क्योंकि इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं. एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड टू 4 मेजर ग्रुप्स. जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह क्लासिफाइड है 4 ग्रुप में: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एलिज. Some of these common microorganisms are shown in the figure 2.1 and 2.4. Then figure 2.4
एंड 2.1 में फिगर 2.1 and 2.24 में है. The 2.1, this is the figure of the bacteria. This was the figure of bacteria, and that the next was that the यहाँ पे कुछ यहाँ पे viruses and microorganisms microbes दिए हुए हैं, जैसे अमीबा, पेनिसिलम एंड एसिफिलियस, पेरिसिलम, ब्रेड मोल्ड, स्पायरोग्रिया, अमीबा, चेरनियोडोमोनास. This was these microbes and microorganisms. What is virus? What is viruses? Let's discuss viruses. Are viruses are small microscopic but are different from other microorganisms. लेकिन यह दूसरे से अलग होता है. They however reproduce only inside the cell of the host organism. एंड इससे रिप्रोड्यूस होता है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म से, लाइक अ ह्यूमन बींग्स, like a human, which may be a bacterium, plants or animals. Some of these viruses are shown in 2.5 this, and the next is 2.5. This is the viruses, and this is the viruses, and we discusses viruses. Common elements like cold infusions and the most cough are caused by viruses. जो cold influenza, flu and most cough are caused by the viruses. Diseases like dysentry and malaria are caused by the protozoans. Where typhoid and tuberculosis is caused by bacteria diseases. You will have learned about some of these microorganisms in class 6th and class 7th. जो कुछ हम माइक्रोब्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम क्लास 6th and 7th में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद वाले को अभी हम पढ़ेंगे जो हम नहीं पढ़े हैं. नए चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लास 8th में पढ़ेंगे. दैट इज़ द टुडे वी डिस्कस दिस 2.2. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव. यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, इसको हम यहाँ अब पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह ये सर्वाइव करते हैं, इसे हम पढ़ेंगे. Microorganism may be single-celled bacteria from some algae and protozoa and multicellular such as many algae and fungi. Microorganisms single-celled organisms है like bacteria, some algae and protozoa and multicellular. They live in all type of environment. हमने पूछा कि किस तरह के वातावरण में ये रह सकते हैं. ये all type of वातावरण में, मतलब कि जैसे all type of environment they have to survive. And the ranging from ice cold climate to hot spring, the desert to the marshy land, they are also found inside the bodies of animals including humans. ये सब including human and animals they have found. Some microorganisms grow on other organism while others exist freely. The microorganism and us, सूक्ष्म जीव and हम. सूक्ष्म जीव और हम को अब हम पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन अ डिटेल. लेट अस स्टडी इन एंड दिस टॉपिक्स. इस टॉपिक से हम आगे कुछ टॉपिक तक हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वह हमारे सहायक हैं. यह हम पढ़ेंगे. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली मित्र सूक्ष्म जीव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं उन्हें कई प्रकार के कारणों के कारण. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड, ब्रेड एंड केक. हम उन्हें कर्ड, दही, ब्रेड, लैटिसिलम्स आर दैट द बैक्टीरिया विच वॉज used by the human to make a curd, bread and cake. Microorganisms have dead. Microorganisms have been used for the production of the alcohol since ages. आजकल कुछ हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं. They are also used in cleaning the environment.
They are also used in clearing the environment. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज वेजिटेबल्स पिल्स, इस माइक्रो हम लोग कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम जो कीटाणु को जैसे कि हमारे वेजिटेबल्स पिल्स रिमेन्स को हम नष्ट करने में करते हैं अनब्रोकन सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. Recall the bacteria are also used in the preparation of medicines, agricultures, and they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. These were also used by the fixing nitrogen, the rhizobium bacteria, which is called rhizobium, that increase the soil fertility, making the curd and the bread. Making curd and bread. How the curd contains microorganisms of this bacterium lactobacillus. That is used, the bacteria lactobacillus was used to form the curd. It multiplies in milk and convert into curd. ये जो बैक्टीरिया होता है जब हम इसको मिल्क में ऐड करते हैं तो यह अपने जैसे कन्वर्ट करते रहता है बढ़ता रहता है, फिर बाद में वह एक कर्ड दही के रूप में बन जाता है, दही के रूप में बन जाता है. The pickles and many other food items an important ingredient of rava, suji, ideals, idlis and bhotura is curd. स्कॉट कैन यू इसका हम इसमें प्रयोग करते हैं. जैसे भटूरा जो आता है, छोला भटूरा, उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है 2.3. एंड इन दिस पेज वी डिस्कस द कॉमेरिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कॉमेरिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड हु डिस्कवर फर्मेंटेशन, which also we read. And that the activity 2.0, the activity which we started to do is the activity take half kg of flour, आटा लीजिए मैदा, and some sugar and mix with a warm water. Add a small amount of yeast powder and knead some soft dough. And need to soft dough. What do you observe after 2 hours dough phases? And add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe? जो ये आटा है फूल जाता है. कैसे फूलता है? By adding that a small sugar and a mix with the warm water. Yeast reproduce rapidly. yeast जो होता है वह बहुत ही जल्दी reproduce होता है and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough. और जो bubbles की वजह से ही कारण वजह से ही वह फूल जाता है. Increases the its value. और वह बड़ा हो जाता है और भार बढ़ जाता है. The baking industries for making breads, pastries and cake. This was used in making bread and the pastries and cakes. Commercial use of microorganisms. The microorganisms are used for the large scale production of alcohol and wine and acetic acid vinegar. Yeast is used for a commercial production of the alcohol and wine. And what is the used for the making alcohol and wine? That is the yeast. Purpose: yeast is grown in natural sugar and present in the grain barley, wheat, rice, crust, fruit juice, etc. And now the activities was 2.4. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 of with water dissolved 2-3 teaspoons of sugar and half spoon of yeast powder and the sugar solution. Keep it covered it's of warm places and 4-5 hours. Now smell the solution. This is the smell of alcohol as the sugar has been converted into alcohol by yeast. This is the smell of the alcohol of the sugar. That the alcohol. This process of conservation of the sugar into alcohol is called the fermentation. What is the fermentation? The conservation of sugar into the alcohol is called fermentation. What is fermentation, which is very clearly to discuss. I hope
you discuss what is the fermentation, the process of changing alcohol, changing as sugar has been converted. सुगर को जब हम कन्वर्ट करते हैं yeast by yeast, this process is called conversion of the sugar into alcohol by yeast is called fermentation. What is the who is the father and who discover the fermentation? Louis Pasteur. Louis Pasteur was the discover the fermentation in 1857. In 1857, this was a very important 1857. 1850 Louis Pasteur fermentation. मेडिसिन से यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेडिकल में क्या इसका यूज़ है हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे. वेयर एवर यू हैव फॉल इन डॉक्टर may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as the penicillin. The source of these medicines is microorganism. और इस microorganism का source है यह viruses, ये bacteria, the microorganism which is called, and the sources of this is called microorganism. These medicines kill or stop the growth of the diseases causing microorganism. यह दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो यहाँ जो बीमारी होती है उसे रोकते हैं. एंड द सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. सच was called antibiotics. These days a number of antibiotics are being reproduced to bacteria and fungi. Strepsillum, straxylin and erythromycin are some of the medicines. And who is that? Alexander Fleming. Who is? The Alexander Fleming was working on a culture of diseases causing bacteria suddenly. He found the spores a little green mold in one of his cultural plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of the bacteria. In fact, it is also killed many of these diseases. From this, the mold penicillin was prepared. Who prepared mold penicillin? The Alexander Fleming. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. Commonly known antibiotics, which are made from fungi and bacteria. In this video, we discuss this only, and then in the next video, we discuss this from vaccine to last. And अभी हम इस वीडियो में हम शुरुआत से वैक्सीन तक पढ़ रहे हैं और अगले वीडियो में वैक्सीन के बाद क्या वैक्सीन है, क्या से increasing soil fertility and what is the use of microorganism in increasing soil fertilities and many things which we read. Commonly known antibiotics which are made by the fungi and bacteria. जो commonly जो antibiotics होता है वह fungi और bacteria से ही बना रहता है. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are given mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. It is important to remember that the antibiotics should be taken only on the advice of the qualified doctor. हमें अपने मन से भी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, हमें क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद से ही लेना चाहिए. If you take antibiotics where not needed wrong dose, it may be the drug. It may make drug less effective when you might need it in a future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, as these are caused by the viruses. हाँ, ये जो अगर हमें हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद से ही लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स का यूज़. अगर बिना हम एंटीबायोटिक्स यूज़ किए, बिना क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लिए अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वह जो हमारा अंदर का रहता है जो क्षमता रोधक, मतलब जो हमारा शरीर के अंदर जो प्राप्त होता है, विच दे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया.
kill the beneficial and useful bacteria, so that is harmful. And then in the future we take in the bacteria in the antibiotics, they were not is work. And the next we discusses the next topics in next video. Why vaccine increasing soil fertility, cleaning the environment, how the microorganism is used in cleaning the microorganism in environment, harmful microorganisms and disease causing microorganisms of humans. And this is the table some common human disease and by microorganisms, and किस तरह होता है, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, एंड मेड ऑफ ट्रांसमिशंस कौन सा है, प्रिवेंटेशंस मैस केयर जनरल क्या है, and the disease causing by microorganism in animals. And Robert Koch, who is Robert, this was a discovery of, they discovered the bacterium Bacillus anthracis, which causes anthrax disease. Disease causing microorganisms in plants, food poisoning, food preservation. Chemical method: food preservation of the food in salt, sugar, vinegar, and cold treatment. Storage and packing, nitrogen fixation, and the nitrogen cycle. After that, we discuss this in next video. Keywords, question answer, and whatever in this chapter. Thank you for watching. Please like and subscribe with the Raj classes. Good afternoon. This is the